In today's video, we will learn how to file PTRC return online in Maharashtra. Step 1 is understanding PTRC. PTRC stands for Professional Tax Registration Certificate. It is mandatory for every employer in Maharashtra who pays salary or wages to the employees. As an employer, you need to deduct professional tax from your employee's salary and pay it to the Maharashtra government monthly or annually depending upon your slab. Step 2 is visiting the website. First, go to the official website of the Maharashtra Government GST Department. The website is mahargst.government.in. This is the portal for all tax-related filings in Maharashtra including PTRC and PTC. Step 3 is login or register. Once you are on the home page, click on the Login e-Services button on the right. Enter your TAN or PAN user ID and password. If you are the first-time user, click on the New Registration to generate your PTRC number. Fill in your business details, PAN address and submit the form. You will receive login credentials after approval. Here is the procedure to file the PTRC. The instructions for the registrations are mentioned. As you all can see, at the bottom you will find a next option. By clicking on it, you will generate this page where you have to enter the PAN card number, the CAPTCHA and select the next option. By clicking on to the next, you will receive. Click on the new dealer if you do not have any active registration certificates under any act administered by MSTD. Moving ahead, you will get this page where you have to fill the user details, your user ID, full name, email ID, and the mobile number. By clicking on the Create Profile, you will receive an email over your email ID where the instructions have been given. Click on the link contained in the email on the user details verification page. Enter the one-time password sent to your registered mobile number. And in case if you have not received the email, check whether the email ID provided by you is correct or resend the email activation link and OTP. This is how you'll get an email. Moving ahead, your name as per the PAN or TAN, one-time password, user ID and the security question. And later on, you'll get the congratulations. Your temporary profile is created with which you need to log in for further procedure. Go to the home page where you need to select the new registration and enter the password and the user ID given sent to you on the email address. Later on, select the Maharashtra State Tax on Profession Trades
if you are the employer, and if you are the employee, select the PTEC. Then fill in the personal details as per mentioned. Here's a tutorial. नेक्स्ट कर लेने के बाद अब ये रहा पूरी की पूरी एक डिटेल्ड फॉर्म है जो आपको करना है फिल। तो यहाँ पे आ जाता है आपका कंपनी का पैन, फिर यहाँ पे आ जाता है पैन टैन की प्रूफ, फिर नाम, नेचर ऑफ वर्क, स्टेटस जो भी है एप्लीकेशन का, वो सैलरी और वेजेस, कितने एम्प्लॉयज़ की वेजेस 7500 से ज़्यादा है, कितने की उससे 10,000 तक की है, कितने की उससे ज़्यादा है, ये डालना है आपको। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट में जाके फुल एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जहाँ भी आपका महाराष्ट्र में एड्रेस है उसकी पूरी की पूरी एड्रेस डिटेल डालनी है, ओन्ड है या रेंटेड है वो डालना है, डॉक्यूमेंट उसके रिलेटेड इन सब में से जो भी है वो चूज़ करना है। वो चूज़ करते ही आपको अपलोड करने का ऑप्शन वो आएगा, वो डालना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका किससे आता है वो डालना है, कंज्यूमर नंबर, अकाउंट नंबर, फिर IGP डिटेल्स आपकी जो भी आपको वो डालनी है। वो फिल कर देने के बाद आपको फिर जाना है नेक्स्ट, बैंक डिटेल्स, कंपनी की जो भी बैंक डिटेल आपको वो यहाँ ऐड करना है, 1 2 3 जितने भी बैंक हैं आपको सारे ऐड करने हैं यहाँ पे, नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, MICR, ये सारी चीज़ें डाल कर साथ में कैंसिल्ड चेक की स्कैन कॉपी भी डालनी है जो कि फर्म के नाम पे ही होनी चाहिए। ये डाल देने के बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका कोई भी है कि मेन एड्रेस कोई और है और कोई और एडिशनल प्लेस है, ब्रांच है, तो आपको वो भी यहाँ पे ऐड करना है। और सेम जो एड्रेस में डिटेल थी उसी के अकॉर्डिंगली डालना है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं, ओन्ड या रेंटेड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, IGR डिटेल्स, वो सारी चीज़ें डाल देने का। फिर आपको जाना है अदर इन्फॉर्मेशन में अगर टिन नंबर है आपके पास तो वो डाल देना है, PF अकाउंट नंबर है तो वो डाल देना है, CST एक्ट के अंडर है या प्रोफेशनल टैक्स के अंडर है तो वो डाल देना है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डाल देना है कि जो भी आपके मेन ऑथराइज्ड पर्सन है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे चूज़ करके उनकी सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, 1 या 2 या 3 जितने भी हैं। तो यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ द पर्सन, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, DOB, OCI है, PTEC नंबर, PTRC नंबर, कुछ भी है तो वो, फिर रेजिडेंशियल डिटेल्स है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स इसके जो भी हैं आपके पास इन सब में से पॉसिबल वो सारी चीज़ें अपलोड करके डाल देनी है। अपलोडिंग का ऑप्शन आपके पास लास्ट वाले पेज में आएगा, तब तक आप यहाँ जो चीज़ें चूज़ कर रहे हैं लास्ट में आपको वो चीज़ें पड़ेंगे डालने। तो यहाँ एक कंसेंट के लिए कहेगा ही कि आपको कन्फर्म है वो आप कर देना है। फिर जाएंगे आप PTEC फॉर्म में। PTEC फॉर्म इज़ बेसिकली फॉर द एम्प्लॉयज़। इसके केस में आई हियर बाय अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 5 ऑफ महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ आपको कंपनी की डिटेल या फॉर्म है आपका तो फॉर्म की डिटेल जाएगी, फिर से जो नंबर वगैरह और कब से आपने स्टार्ट किया है वो चीज़ें चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अदर इन्फो है, एंट्री नंबर है, कुछ और लाइसेंस वगैरह है आपके पास तो वो डाल देना है। उसके बाद इस पेज में आके आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने पीछे चूज़ किए हैं उसकी एविडेंसेस, प्रूफ, सारी चीज़ें यहाँ इस पेज पे आके अपलोड होंगी। और फाइनली लास्ट पेज में जाके आपको एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिल जाएगा, फाइनल जो भी है। और फिर आपको पे करना पड़ेगा प्रोफेशनल टैक्स की इसकी फ़ीस जो भी है 2,000-2,400 के आसपास कुछ ना कुछ है। तो वो आपको 1 साल का आप चाहे तो एक ही बार में पे कर सकते हैं, नहीं तो 200 करके हर महीने ही पे कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप अप्लाई करते हैं तो यूजुअली 1 से 2 घंटे में, नहीं तो 1 से 2 दिन में मैक्सिमम आपके पास फाइनल अप्रूवल आ जाती है। और फिर आप जाके RC वगैरह डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनकेस आप अगर RC नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी है कि आप होम पेज पे जाके